So the topic is power control topologies. We will discuss in this today's lecture, which are used with the maximum power point tracking algorithms. As we all know that at the peak operating point, solar module is going to extract the maximum power and will supply it to the load. The concept depends upon the fact of the maximum power transfer theorem, where we see that when the load impedance is equal to the input impedance, the load will receive the maximum power in terms of Pmax. So what the role of DC converter here? DC converter act as a power interface or power conditioning device between a solar module, that is a PV module, and the load. And the work of the DC converter is to transmit the maximum power from the PV array towards the output side. So DC converters can be used in the applications wherever the average load voltage may be more than or less than the source voltage. So जहां भी आपकी एवरेज लोड वोल्टेज सोर्स वोल्टेज से ज्यादा जब कम होगी, वहां पे हम DC कन्वर्टर्स का इस्तेमाल करते हैं. एंड द इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द कन्वर्टर दैट इज नोन एज ड्यूटी साइकिल is need to be changed to vary the input impedance so that it can be matched with the load impedance. Z इनको हम ZL के बराबर लेके आ सकें या उससे मैचिंग करवा सकें. So that is done by changing the value of the by adjusting the value of the duty cycle. And the matching of this value, that is Zin is equal to ZL, or Zin or ZL की value को जब match किया जाता है with the change in the value of the duty cycle, all the operation is performed at the peak point, which is known as the maximum power point, MPP. Numerous algorithms that we have already discussed in the last lecture are used to change the duty ratio of the converter. Hence, in order to get the impedance equal to the load impedance, input impedance equal to the load impedance corresponding, we will get a maximum power towards the load. So in the below figure, you can see a schematic representation or block diagram representation of the same that we have discussed. A PV module is there, a DC converter in between the PV module and the load, because it acts as a power interface device. And along with the DC converter, we used a MPPT block also, because the duty cycle of the converter, which is changed to vary the input impedance and match with the load impedance, is done at the MPP, that is maximum power point पे हम करते हैं. तो maximum power point ट्रैकिंग जो ब्लॉक होगा या ट्रैकिंग एल्गोरिथम है, तो वो उसी के साथ आपका यूज होता है कन्वर्टर ब्लॉक के साथ, बिकॉज कन्वर्टर ब्लॉक की जो ड्यूटी रेशियो है वो डिपेंड करेगी इस MPPT की आउटपुट के ऊपर. Now, various types of DC converters are being used in order to act as a power interface between the solar module and the load to get the maximum power towards the load end side. Like step down buck converter use करते हैं हम, step up boost converter use किया जाता है, combination of step up और step down use किया जाता है, like buck boost, SEPIC inverted buck boost टाइप यूज की जाती है और कुक कन्वर्टर टाइप यूज की जाती है. SEPIC का मतलब है सिंगल एंडेड प्राइमरी इंडक्टर कन्वर्टर. Now the DC converters are used as a switch mode controller because as you know, as you can see from the word that DC, so they convert the DC into the DC output. DC input आएगी और DC ही हमें output मिलेगी. So they convert, or we can say that they convert the unregulated DC input voltage into the regulated DC input voltage. Means uncontrolled जो आपकी DC input voltage होती है उसको controlled form में convert कर देते हैं. All the process can be achieved either through PWM, that is pulse width modulation technique, and the switches which are generally used are BJT, power BJT, MOSFET और IGBTs का इस्तेमाल किया जाता है. Along with these semiconductor switch devices, we use LC filter also in the converter circuit for the filtering purpose. Or every type of the power converter will have some advantages and disadvantages depending upon the application as they have been used at the load side. Now we'll see one by one all the types of the converter, how they are used in order to get the maximum power towards the load, and second how they are used in order to match the input resistance with the load resistance, and so on. So now buck converter क्या था, हमने अभी बोला था which type of converter it is known as, इसका नाम क्या है buck converter का? हाँ जी बताएगा कि बक कन्वर्टर का नाम क्या है.
It is a step down or step up? Step down. Step down. Very good. So load voltage side, as it is a step down, so load side voltage जो होगी, it is always less as compared to the source side voltage. So buck converter के अंदर जो हमारी load voltage होती है वो source voltage से कम होती है, and correspondingly reverse for the current. Load current क्या होगा, हमेशा आपका बड़ा होगा source current से. So basic circuit which is used for the step down converter. Now the conversion ratio of the buck converter is equal to V output by V input is equal to I input by I output is equal to D, where D represents the duty cycle for the converter. Here, buck converter. Now from the equation number 1, we can get the value of V input is equal to V naught, that is V output by D, and I input is equal to I naught into D. So if we want to find out the input resistance, because we know that we have to equate the input resistance equal to the load resistance and finding out the condition at which it can be obtained. So before moving towards that, we have to find out the value of the input resistance of the converter also. So input resistance of the converter can be calculated from the above two equations, that is equation number 1 and equation number 2. Like you know that R is equal to what, V by I. So V R input is equal to what, क्या बन जाएगा आपका, V input by I input. Clear? I think somebody is in the lobby. Yes. So V input और I input की वैल्यू को यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे from the equation number 1 and 2. What will we get? V naught by I naught divided by D square, and V naught by I naught को मैं लिख सकता हूँ R naught से represent कर सकता हूँ R naught by D square. So this will form the equation number 3. Now where R naught represents the load resistance. As the duty cycle changes from 0 to infinity or basically 0 to 1, तो R in की वैल्यू क्या होगी, ड्यूटी साइकिल को चेंज करके हमने क्या कर रहे हैं हम, we are matching the input impedance with the load impedance or input resistance with the load resistance. So R in की वैल्यू आपकी अगर ड्यूटी साइकिल 0 से इंफिनिटी की तरफ चेंज होगा, so as per the equation number 3, what will happen, R in will change from infinity to R naught according to the change in the duty cycle from 0 to 1. जैसे वो 0 से 1 वेरी करेगा, आपका R in इंफिनिटी से लेके R naught के बीच में वेरी करेगा. Now for this converter, अगर RMPP की वैल्यू means resistance at the maximum power point, आपका permissible values of the Rn की रेंज में नहीं आएगा, then the MPP catching will not be possible. ये पॉसिबल तभी हो पाएगा अगर आपकी RL की वैल्यू कम होगी या इक्वल टू होगी वैल्यू ऑफ द RMPP, and the range of the values has been shown in this figure. So for the first figure that you can see on the right hand side, it shows the range of the R in values from the duty cycle D is equal to 0 to D is equal to 1. As you see then R is equal to infinity से लेके R in is equal to R naught तक vary कर रहा है. So this is the range of the R in. R in कहाँ से लेके कहाँ तक vary कर सकता है, and we will have to see how at what point we can get the value equal to the RMPP. Load resistance की वैल्यू आपकी RMPP के इक्वल कब आएगी. And on the right hand side figure you can see the mapping zone. आप mapping zone देखोगे for the maximum power point, ठीक है, which is known as the MPP tracking zone also. So as you can see at these 2 points means at the significant points, एक ये वाला significant point होगा आपका, ये वाला significant point. At this point RL tends to 0 and RL tends to infinity. यहाँ पे 2 points के ऊपर, and between some points we have marked the 3 points as A, B and C. At C point, what will be the case? RLC means load resistance at C point will be greater than the RMPP, which is not possible in order to catch the maximum power point. That's why this zone is known as a non-capture zone. जहाँ पे हमें MPP catch करना difficult हो जाएगा. So that's why where the value of the load resistance is greater than the RMPP. And at A point, RLA is less than equal to or less than not equal to or less than RMPP. So this will act as means point A से आप shift कर सकते हैं, because here the load resistance is less than the RMPP, not equal to the RMPP. So this will not be a point of the maximum power. A will not be a point of the maximum power. What will happen?
एज वी चेंज द कन्वर्टर डी, कन्वर्टर की डी को चेंज करेंगे, ठीक है, ड्यूटी साइकिल को चेंज करेंगे, we will be able to match this load resistance with respect to the RMPP value, ठीक है, or in other words we can say that we are going to match the load resistance with the value of the R in. So the point A has been shown shifted towards the point B with the black arrows, यहाँ black arrows के साथ हमने point A को driven किया towards the point B which will depend upon the converter duty cycle. So at point B what will happen, RL let's say equal to RMPP, so B will be considered as the maximum power point, and below beyond the B the zone will be known as the non-capturing zone for the buck type of converter. Next is known as a boost converter. Similarly we'll see for the boost converter also. So boost converter हमारा क्या होता है, it is known as a step up converter. तो यहाँ पे जो लोड पोटेंशियल होगा वो क्या होगा आपका, will be greater than the source potential, or load voltage will be greater than the source voltage, and opposite will be for the load current less than the source current. So again the step up converter के लिए आपका block schematic diagram show किए गए circuit diagram. Now in case of boost converter what will be the conversion ratio? Conversion ratio is equal to 1 by 1 minus D. Now from this equation we can have the value similarly as in the as we have done in the previous case. We can get the value V input is equal to V naught 1 minus D, and I input is equal to I naught slash of 1 minus D. ठीक है, तो ये हमें सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी. Again we will find out the value of the input resistance of the converter, which when we can be calculated from the equation number 1 and equation number 2 as follows. R in is equal to V input by I input. We will put down the values that we have obtained from the equation number 1 and equation number 2 respectively, and then we will have to solve the equation in order to get the final result. And the final result that will be obtained is equal to R naught multiplied by 1 minus D the whole square. So input resistance is equal to how much? Output load resistance into 1 minus D, where D represents a duty cycle, the whole square. So this will form the equation number 3. So now the MPP tracking system will change the value of the Rin and tries to achieve the input resistance is equal to the RMPP value, because जो हमारा लोड रेजिस्टेंस के इक्वल जब हम करते हैं तो इट इज डन एट द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम पावर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंगली ये हम काम सारा परफॉर्म करते हैं पीक ऑपरेटिंग पॉइंट. दैट्स व्हाई जो पावर कंडीशनिंग जो डीसी-डीसी कन्वर्टर के साथ डीसी-डीसी कन्वर्टर के जब हम कंट्रोल करते हैं, उसके ड्यूटी साइकिल को जब हम कंट्रोल करते हैं, सो उसको कंट्रोल इस तरीके से किया जाता है ताकि हमारा जो लोड इंपीडेंस मैच करे इनपुट इंपीडेंस के साथ, वो किस वैल्यू पे मैच करे, द वैल्यू एट विच द मैक्सिमम पावर पॉइंट इज ऑब्टेन्ड. तो इसलिए एमपीपीटी एल्गोरिथम भी साथ में चलता है आपका कंट्रोल एल्गोरिथम, और कन्वर्टर कंट्रोल भी आपका साथ में ही कैरिड आउट होता है. नाउ दिस विल बी इम्पॉसिबल अगर आपकी RMPP की वैल्यू रेंज के अंदर नहीं आएगी विच इज अलाउड फॉर द वैल्यूज ऑफ R इनपुट. सो इसीलिए RMPP को या फिर मैक्सिमम पावर पॉइंट को अचीव करना डिफिकल्ट होगा अगर हमारी RL की वैल्यू कम होगी. मींस दिस विल बी द ऑपोजिट केस ऑफ द प्रीवियस वन. बक कन्वर्टर का बिल्कुल ऑपोजिट केस होगा बूस्ट कन्वर्टर के अंदर. अगर RL की वैल्यू RMPP से कम है तो हमें दैट विल बी नोन एज अ नॉन कैप्चरिंग जोन. वो आपकी नॉन कैप्चरिंग जोन बन जाएगी. और कैप्चर जोन आपकी क्या होगी? मींस वी कैन अचीव द वैल्यू ऑफ MPP ओनली व्हेन RL इज ग्रेटर देन इक्वल टू RMPP. So the below curves has been shown for the operating region of Rin for step up converter, which is known as the boost converter, and MPP tracking zone. So at D is equal to 0, Rin की value हो जाएगी R naught, और at D is equal to 1, when the duty cycle is equal to 1 है, what will be the value of Rin? 0 हो जाएगी. And so the capturing zone अब आपकी जो range हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी fall करेगी. ठीक है. Whereas ट्रैकिंग जोन ऑफ द मैक्सिमम पावर पॉइंट विल बी नाउ दिस. अब A से लेके जो B पॉइंट के बीच में दैट विल बी नोन एज अ नॉन कैप्चरिंग जोन, एंड द पॉइंट विल शिफ्ट फ्रॉम C टुवर्ड्स द B डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन द कन्वर्टर ड्यूटी साइकिल. ठीक है जी. सो दिस विल बी अ एग्जैक्ट रिवर्स, और कह सकते हैं एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द बक कन्वर्टर. सर सुधांशु सर लॉबी में, उसको एक्सेप्ट कर लेना सर. ओके बेटा.
Now next is known as a step up or step down converter. Now it is a combination of the previous two types. Buck boost converter इसलिए इसको बोला जाता है because it uses the combined effect of step down and a step up converter in its operation, where the load voltage can be increased or decreased by keeping the reference source voltage and making the change in the duty cycle. Conversion ratio or proportion for the step up step down converter or buck boost converter is given here. V naught by V in is equal to I n by I naught is equal to D by 1 minus D. दोनों का हमने ले लिया, ठीक है. From equation number 1 V in is equal to कितना आ जाएगा जो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है. V इनपुट की वैल्यू निकालनी है एंड सिमिलरली I इनपुट की वैल्यू निकालनी है. इक्वेशन नंबर 1 से हम ऑब्टेन कर सकते हैं. दैट हैज बीन रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है जी, आपकी स्क्रीन के सामने शेयर किया हुआ. Now we will find out the value of the input resistance or source resistance, which can be evaluated as follow, and the answer comes out to be R naught multiplied by 1 minus D ka whole square divided by D square. So by putting the value of D, which changes from 0 to 1, we will get the value of Rn, which will change from infinity to 0. So as it is a combination of step up and step down both, इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर कोई भी नॉन कैप्चरिंग जोन नहीं होगी, ठीक है ना. सारा का सारा जितना जोन मींस इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्रीवियस टू टाइप्स. तो प्रीवियस टू टाइप्स के अगर कंबाइंड इफेक्ट करें तो यहाँ पे Rn की रेंज आपकी अब हमारी बढ़ जाती है, हमें इंक्रीज्ड रेंज ऑब्टेन होती है बिकॉज वी कैन यूज ऑल द पूरा का पूरा ये हम रेंज इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे स्टेप डाउन और स्टेप अप दोनों ही हो रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द value of the Rin. And same, the point A से B की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है, point C से B की तरफ शिफ्ट हो सकता है. तो यहाँ पे जो RL की वैल्यू होगी, it can be greater than also, it can be less than RMPP also. So we will have to adjust it by changing the duty cycle of the converter, which will be changed according to the MPPT block or algo. So therefore it permits maximum power cover up in both ways. Rin will be of any value using this type of converter, which can be greater than or less than the RMPP, due to which the PV system can carry the MPP irrespective of present radiation alignment. With this helps in achieving the good MPP catching efficiency. MPP catching efficiency आपकी बढ़ जाती है because it can be obtained from either zone. Now the maximum power point will be achieved for a variety of the RL value, irrespective of the relationship between RL and RMPP. So हमें डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता कि RL आपका बड़ा होना चाहिए, जैसे प्रीवियस केस में हमने देखा है कि अगर RL is less than equal to RMPP होगा तभी कैप्चर हो सकता है, या फिर RL is equal to greater than RMPP होगा तभी हम कैप्चर कर सकते हैं. अदरवाइज opposite condition if lies in the case of step down or step up converter, then we are not going to capture the MPP and maximum power point को हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे. We will be going far away from the maximum power point. But certain types of, you can say that, problems are not encountered in buck boost converter. Next type is used as a single-ended primary inductor converter, SEPIC. So इस कन्वर्टर में हम अलाउ करते हैं जो वोल्टेज होती है आपकी लोड साइड पे, वो कभी ज्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है, या इक्वल भी हो सकती है इनपुट वोल्टेज. मीन लोड साइड वोल्टेज कैन बी ग्रेटर, लेस और इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज. So control transistor जो यहाँ पे है, it will regulate the output voltage by using its duty cycle. It is like a step up converter followed by a step up step down converter. Step up converter and followed by a step up step down converter. So output इसके जो हमें obtain होती है, it is of the same voltage polarity as the input. And the coupling capacitor which is connected in this circuit is used for the confinement of the load and the source side. MPP catching bit easier होती है and simpler होती है because of the less source ripple current. And it can be obtained similar like in the previous case, जैसे हमें obtain होती है वैसे ही यहाँ भी Rin की zone हमारी उतनी ही बच जाती है जैसा हमारा step down और step buck boost converter के अंदर होता है. Only the simplicity that more arises is that in this case ripple currents are lesser in the ripples are lesser in the source current because of the coupling capacitor connected in the circuit. Only because of this way we can say that SEPIC converter can be more decisive as compared to the step up or step down converter. Next type of converter is known as Cook converter.
जहां भी हमारी लोड वोल्टेज ज्यादा और कम हो सकती है सोर्स वोल्टेज से, but the load voltage will have the opposite polarity of the input voltage as not in the case of previous one that is known as SAPIC converter. वहां पे आपकी सेम पोलैरिटी होती है, यहाँ पे हमारी लोड वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स होती है एज कंपैरिजन टू द केस ऑफ द SAPIC converter. Else जो हमने इंडक्टर यूज करते हैं सोर्स साइड की तरफ, ठीक है, वो फिल्टर की तरह एक्ट करता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द हाई हार्मोनिक करंट, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज ट्रांसमिटेड टू दिस inductor by the converter is related with the capacitor C. Now several types of optimization algorithms are used in order to control the position of MPP in a solar system. Algorithms are used to fix the location of MPP always in such a way that system will operate at its optimal level and will get the maximum efficiency. Output of this block, that is MPPT block, will be given to the converter block in order to change the duty cycle. Let us see some of the conventional and advanced control algorithms which are used in solar system and solar PV system. Like some of the conventional methods which are used are known as real-time algorithms, in which we use actual data of the system like voltage, current, and power for the working. And the MPPT algorithms that has been discussed below are applied on PV-based system. And the advantages they have, like less oscillation, faster response, simplicity in operational. So tracking of MPP by them for fast changing in environmental condition real time becomes the good. तो ये जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे एल्गोरिथम्स, वही एल्गोरिथम है फिट अप एंड ऑब्जर्व, जो आगे सेवरल इम्प्रूव फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइक एडेप्टिव पी एंड ओ, वेरिएबल स्टेप साइज पी एंड ओ, मल्टी वेरिएबल पी एंड ओ, एंड वेरिएबल perturbation size adaptive PO, PSO based PNO, particle swarm optimization based. Incremental conductance method, modified variable step size, improved variable step size, modified adopted incremental conductance method. And the latest one that comes under the category are known as soft computing or intelligent methods. Like neural networks use कर सकते हैं हम, FLC based MPPT use कर सकते हैं, particle swarm optimization use कर सकते हैं हम, Grave-Wolf algorithm, Art-Ploney, BAT algorithms. So these are the known as optimization algorithms in order to track the MPP to its best value. Microprocessor based algorithm और Stucco puzzle based algorithm का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. In the last, I have given here a comparative analysis of the various converters that we have discussed and performance parameters also. In the table number 1 and table number 2. In the table number 1 we are going to compare the step up step down and step up step down comparison. पहले तीन का comparison कर रहे हैं. अगर step up step down और step down में power factor देखा जाए, power factor high होता है step up में, step down में poor होता है. Similarly step up step down में भी high होता है. Vin output क्या होती है आपकी, Vin से ज्यादा, V output Vin से free. Vin output का कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा या कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. So it is free, it will not be depend upon the V output. Filter of small size is needed, filter of large size is needed in step down, filter of large size is again needed in the case of step up and step down. Switching voltage V0 है, switching voltage is Vn और switching voltage यहाँ पे बन जाती है आपकी NV0 plus Vn. Comparison of last तीन टाइप का comparison कर लेते हैं. Step up because step up, step down, SAPIC और Cook converter का. Based upon the performance of MPPT block. तीनों के अंदर आइडियल परफॉर्मेंस ऑब्टेन होते हैं. कंपोनेंट यूज्ड स्टेप डाउन में कम यूज होते हैं, SAPIC में ज्यादा यूज होते हैं और कुक में भी ज्यादा यूज होते हैं. फैसिलिटी ऑफ कंट्रोल कंफाइंड फैसिलिटी है, नॉन कंफाइंड फैसिलिटी ऑफ कंट्रोल इज गिवन इन द SAPIC एंड कुक कन्वर्टर. एरे करंट वी हैव टू डिस्कनेक्ट इट, रेगुलर एरे करंट हमें ऑब्टेन होता है. मेथड ऑफ करंट स्केलिंग डिफिकल्ट, स्मूथ एंड स्मूथ. सिस्टम ट्रांजिएंट्स नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ कुक कन्वर्टर और लेस. वी कैन से दैट SAPIC में हमारा मॉडरेट होता है और स्टेप अप स्टेप डाउन में काफी ज्यादा ट्रांजिएंट्स आपके ऑब्टेन होते हैं सिस्टम में. इफ यू टॉक अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ ट्रैकिंग, इट कैन बी कंसीडर्ड एज पुअर, मॉडरेट एंड मोर in the rising cases of step up step down SAPIC and the Cook converter.